Hello students, welcome back to our today's lecture. So आज के लेक्चर में हम और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है आपका वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो अंडर दिस टॉपिक आज के लेक्चर में हम तीन बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा दैट इज द रमन एक्टिविटी ऑफ वाइब्रेशंस। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से वाइब्रेशंस हमारे पास रमन एक्टिव है और कौन कौन से वाइब्रेशंस हमारे पास रमन इनएक्टिव है। इसके साथ साथ हम और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे जो कि होगा हमारा रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। सो लेट्स कंटिन्यू। पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द रमन एक्टिविटी ऑफ वाइब्रेशंस। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से वाइब्रेशंस हमारे पास रमनली एक्टिव होंगे और कौन कौन से वाइब्रेशंस हमारे पास रमन इनएक्टिव रहेंगे, और क्या कंडीशन रहेगा कि पर्टिकुलर वाइब्रेशंस के लिए कि वो रमन एक्टिव दिखाए और क्या कंडीशंस आपके पास होना चाहिए कि रमन इनएक्टिव दिखाए। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशंस हमारे पास ऑलरेडी हमने जब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने डिस्कस किया था कि फॉर ए वाइब्रेशंस टू बी to be Raman active, there should be change in the polarizability. तो किसी भी वाइब्रेशंस को रमन एक्टिव होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन था कि उस वाइब्रेशन से उसकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उस वाइब्रेशन से आपकी मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन होना चाहिए, तभी वो वाला वाइब्रेशन आपके पास रमन एक्टिव होंगे, अदरवाइज योर वाइब्रेशन विल नॉट बी रमन एक्टिव। सो the change in the polarizability, or I can say the polarization should occur. That is the prime criteria for a vibrations to be Raman active. Now, the important point here is कि आपके पास एक molecule है. If you have a molecule and the molecule has no symmetry, this is important. आपके पास एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री नहीं है, या हम कह सकते हैं योर मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिकल, देन इन दैट केस यूजुअली वी कैन से दैट ऑल द vibrational modes are Raman active. So in such molecules which do not have any symmetry, all the vibrational modes are Raman active. So ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक है, या हम कह सकते हैं द मॉलिक्यूल इज नॉट symmetrical, or we can say if the molecules do not have any symmetry, so in that particular case we can say that all the vibrational modes of such molecules are Raman active. Now the problem arises, अब आपके पास problem कहाँ पे होगा? So the problem arises when your molecules has symmetry. When your molecule has symmetry, or I can say when the molecule is symmetrical, then we cannot say that all the vibrational modes are Raman inactive. या उस केस में हम अगर आपकी molecule में कोई भी symmetry अगर present होंगे, so in that particular case it will not be easy to make a decision whether a particular vibration is Raman active
और नॉट। तो उस केस में हम डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकता कि इस मॉलिक्यूल के ये वाला वाइब्रेशंस रमन एक्टिव होंगे, ये वाला वाइब्रेशंस रमन एक्टिव नहीं होंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस it is not easy to make a decision whether a vibration is Raman active or inactive. So in this case, we have to consider all the vibrations and we have to look whether that particular vibration will lead to any change in the polarizability or in the polarization. So for that, let's take some example. अब उसको हम देखने के लिए हम कुछ examples देते हैं. The first example is our water molecule. So now let's take the example of H2O. तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा वाइब्रेशन रमन एक्टिव होंगे और कौन सा वाइब्रेशन रमन इनएक्टिव. So we know that this water molecule is, I can say, simple asymmetric top type molecule. So whose now let's see how we can what are the types of polarizability ellipsoid in case of water molecule. So I will show the polarizability ellipsoids of water molecule here. Now let's see how this how the polarizability of this water molecule change when the molecules perform different kind of vibrations, whether it can be symmetric vibrations, it can be asymmetric, or it can be bending vibrations. So this is your water molecule, and we have said that is a simple asymmetric top type molecule. तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बनाया हुआ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिप्सॉइड्स, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाया गया है. तो अगर आपको कैसे हम इस पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड को हमने बनाया है, इसको अगर आपको समझना है तो इसके लिए हमने पहले और दो वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड की पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बनाने के लिए हमने दो वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है. तो आप उस वीडियो को देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आएंगे. तो here the first type, or the first is your symmetric vibrations. So the first diagram will give you the symmetric stretching modes or symmetric vibrations. So here let's see the central one is your equilibrium configuration of water. तो यहाँ पे जो सेंटर में जो भी आपका स्ट्रक्चर है, this one, these are the equilibrium configuration of water molecule. Now we have two extreme cases. हमारे पास दो extreme cases है. एक एक्सट्रीम केस हमारा राइट में है इक्विलिब्रियम के, दूसरा एक्सट्रीम केस हमारा लेफ्ट में है इक्विलिब्रियम के. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका सिमेट्रिकली इलोंगेशन हो रहे हैं. तो आप इन दोनों फिगर को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहे हैं. तो वी कैन से दैट द सिमेट्रिकल इलोंगेशन इज ऑकरिंग ऑन द लेफ्ट साइड. अब क्या होगा, जैसे ही ये सिमेट्रिकल इलोंगेशन दिखाएंगे, then what will happen, the electron held between these two nuclei, that is oxygen and hydrogen, will become loosely held. अब ये जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली हेल्ड होंगे. Then under the influence of electric field, the electron can easily move towards your positive and negative pole of the electric field. Thus there thus the polarization will occur very easily when your water molecules undergo symmetric elongation. अब इसलिए आपको यहाँ पे एक पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड यहाँ पे एक दिखाया गया है, जिसमें अगर आप इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करेंगे तो इसका साइज क्या है, छोटा है,
और ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था कि polarizability ellipsoid, the size of the polarizability ellipsoid is inversely proportional to the degree of polarization. जितना ज्यादा polarization होगा उतना आपकी polarizability ellipsoid की साइज क्या होंगे, छोटा होंगे. तो जितना साइज छोटा होगा, it means in that particular configuration the molecule is showing more polarization. तो अगर हम यहाँ पर राइट वाले केस पे देखेंगे, यहाँ पे साइज ऑफ द पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड इंक्रीज हुआ है. व्हाई? बिकॉज हियर वी कैन से द सिमेट्रिकल कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस. सिमेट्रिकल कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस मींस ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड क्या हो रहा है, आपका छोटा हो रहा है. तो जैसे ही आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड छोटा होगा, the electron between your hydrogen and oxygen will held more strongly. तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की न्यूक्लियस क्या करेंगे, इनको स्ट्रांगली हेल्ड करेंगे, ड्यू टू विच द पोलराइजेशन इज नॉट इजी. Due to which the polarization is not easy. अब आपका जितना पोलराइजेशन नहीं होंगे, size of the polarizability ellipsoid will increase. So the first one is the symmetric stretching mode for water. Now the second here is I can say the bending vibrations. Yeah, bending modes, vibration. अब ये देखो, आप यहाँ पे भी हम इक्विलिब्रियम के साथ कंपेयर करेंगे. दिस इज द इक्विलिब्रियम वी कैन से configuration of water molecule. So it has some amount of polarization, and due to which we have a certain size of polarizability ellipsoid. अब क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन को हम बाहर की ओर इस तरह स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन दोनों आगे आएंगे और ये लगभग लिनियरिटी शेप अटेन करेंगे इस तरह. अब जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे लीनियर होने की वजह से इसमें पोलराइजेशन इजी होंगे. पोलराइजेशन इजी होने पर इसका साइज, द थिकनेस ऑफ दिस पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड is decreasing, or we can say the size of the minor axis is decreasing and the size of the major axis is decreasing, due to which we can say in this particular case, bending case, the polarization is more. However, here what we have, the two hydrogens are coming close to each other. तो क्या होगा इसमें, जैसे ही आप इन दोनों हाइड्रोजन को और क्लोज लाएंगे, एक स्टेज ऐसे आएगा जहां पे ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और आपको ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह लगेंगे. अब यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल टू दिस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. सो वी कैन so the polarization will not be easy in this particular case, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका पोलराइजेशन होंगे तो हाइड्रोजन को बॉन्ड के या तो इस साइड जाना पड़ेगा या आपको इस साइड. तो ये यहाँ पे कर्व बॉन्ड बनेंगे, which is not a feasible mode. Therefore, in this particular case, we can say I can say the polarization is not that much easy. However, we can clearly see the difference in the polarizability ellipsoid in this extreme case and this extreme case. Therefore, there is some change in the size of the polarizability ellipsoid in these two extreme cases. And again, the condition for vibrations to be Raman active is that there should be change in the shape or size of these two polarization ellipsoid in these two extreme cases. So again, here the size is also changing. It means this particular symmetric vibration I can say is Raman active. ये हमारे पास रमन एक्टिव होंगे. यहाँ पे इन दो एक्सट्रीम केसेस की केस में दोनों पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड की साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो आई कैन से दिस particular vibration is also Raman active. Now let's consider the asymmetric vibrations या asymmetric stretching mode. Asymmetric stretching mode में क्या होगा या asymmetric vibration में क्या होगा, जो आपकी दो आर्म्स होंगे, that is oxygen and hydrogen, ये दोनों एक जैसा आपका इस तरह जहां पे दोनों एक साइड में वाइब्रेशन किया था वो यहाँ पे नहीं होंगे. तो अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड कंप्रेस हो रहा है, ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इलोंगेट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर
यहाँ पे इसका हम कुछ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन होगा, अल्फा का कुछ वैल्यू होगा। यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर बॉन्ड में क्या होगा, पोलराइजेशन इजी होगा, जो कंप्रेस हुआ है उस वाले बॉन्ड में पोलराइजेशन कम होंगे। तो लगभग द पोलराइज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन दैट इज अल्फा विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी हैव फॉर दिस इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली ऑन द राइट साइड, इसमें हमारे ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्रेस हो रहा है, ये वाला इलोंगेट हो रहा है। Now we can say the magnitude of the, I can say, polarization is not changing. However, if we compare these three, there is some change in the direction of the polarizability ellipsoid. So यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन में है। So the condition is also already we have said either there should be change in the magnitude of polarization or there should be change in the direction of the polarization. So in this case, the magnitude is not changing, but the direction is changing. So this particular vibration is also Raman active. ये भी आपका Raman active होगा. So this is the case of water molecule, which is a asymmetric top molecule. Now, so in case of water molecule, we can say all the three vibrations, whether it is symmetric, तो आपके water molecule में क्या था, एक आपका symmetric vibration, second is your bending vibration, in the third is your asymmetric vibration. Asymmetric vibration. So this all the three are Raman active. तो कोई भी अगर आपसे पूछते हैं वाटर में कौन कौन से वाइब्रेशंस आपका Raman एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, तो due to the change in the degree of polarization or the size of the polarizability ellipsoid or direction of the polarizability ellipsoid is changing in all the three vibrations. That's why we can say in case of water molecule, all the vibrations are Raman active. Now, let's take the example of a carbon dioxide molecule, which is a linear molecule, and we have already said if the molecules have some center of symmetry or centrosymmetric, then in that particular case हम और भी अच्छे से क्लियरली इसको हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वाइब्रेशन रमन एक्टिव होंगे और कौन सा वाइब्रेशन रमन नहीं एक्टिव होंगे. सो दिस इज द केस ऑफ आवर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दैट इज CO2. तो ये हमारे पास CO2 के केस है जिसमें हम देखेंगे कि CO2 का कौन सा वाइब्रेशंस एक्टिव होंगे और कौन सा वाइब्रेशंस एक्टिव नहीं होंगे. So this is the case of our CO2. Again, in CO2 we can have three types of vibration. One is our symmetric vibration, that is the first case. Second is our bending vibration, and the third is our asymmetric vibrations या asymmetric stretching modes. So यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या वाटर और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस होगा या कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होंगे. तो अगर हम कंपेयर करते हैं, let's first see the I can say the symmetric vibration. Symmetric means the vibrations or the bond length are changing symmetrically. या तो वो दोनों bond means the bond between carbon and oxygen, that is this particular bond. Now again, the molecule present in the center is our equilibrium configuration, and the two extreme cases are present on the left and the right. ये दो आपका extreme cases होंगे और ये बीच में जो होगा वो equilibrium configuration होंगे. तो अगर हम यहाँ पे symmetric vibration means on the left side both the carbon and oxygen bonds are stretching. ठीक है, तो इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे, दोनों बाहर की ओर जा रहे हैं. ऑन द राइट साइड बोथ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर कंप्रेसिंग, दोनों अंदर की ओर आ रहा है. ठीक है, तो अगर दोनों एट ए टाइम कंप्रेस होता है या दोनों एट ए टाइम आपका इलोंगेट होते हैं, सो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज सिमेट्रिक वाइब्रेशन. सो this is the polarizability ellipsoid of our
carbon dioxide molecule at the equilibrium configuration. Now again, when the bond stretch, the electron present between carbon and oxygen will loosely held and it can be easily polarizable. तो जितना easily polarizable होंगे, the size of the polarizability ellipsoid will decrease. तो ये आपका छोटा सा साइज यहाँ पे polarizability ellipsoid का बन रहा है। अगर हम राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, सिमेट्रिक कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन होने का मतलब है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन will be strongly held by the nuclei of the two atoms, that is carbon and oxygen, due to which the polarization will not become so much easy. अब इतना easily polarization होने का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दो एंड पे आपका मूव करेंगे। नेगेटिव साइड वाले साइड आपका न्यूक्लियाई मूव करेंगे, पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स योर इलेक्ट्रॉन विल मूव, सो देयर विल बी सम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, दैट इज देयर विल बी सेपरेशन ऑफ द चार्ज ऑकर। तो यहाँ पे इजीली चार्ज सेपरेशन नहीं होंगे, ड्यू टू विच द साइज ऑफ द पोलराइजिबिलिटी इलिप्सॉइड विल इंक्रीज। तो यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द पोलराइजिबिलिटी इलिप्सॉइड इन द टू एक्सट्रीम केसेस, दैट इज द सिमेट्रिक elongation and the symmetric compression. Therefore, we can easily say that the symmetric vibration in case of carbon dioxide is Raman active. ये आपका रमन क्या है, एक्टिव है। Now let's see the bending vibrations and asymmetric vibration. Now, if we compare the bending vibration here, this is the equilibrium position. Now these carbon oxygen can bend in two ways, that the oxygen can move either upward or the oxygen can move either downward. तो दोनों केस में क्या होगा, आपका डिग्री ऑफ पोलराइजेशन सिमिलर रहेंगे, ठीक है, सिमिलर रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस वाले पोलराइजिबिलिटी इलिप्सॉइड और इस वाले पोलराइजिबिलिटी इलिप्सॉइड में कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ना यहाँ पे आपकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, ना यहाँ पे आपका वी कैन से यहाँ पे आपकी डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन विल बी रमन इनएक्टिव। ये आपका रमन एक्टिव नहीं होंगे, तो बिकॉज देयर इज नेदर चेंज इन द साइज एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजिबिलिटी इलिप्सॉइड इज ऑकर। Similarly, here also, in case of asymmetric vibrations, this is on the left side, this particular carbon-oxygen bond is elongating and the right carbon-oxygen is compressing. Here also, the left carbon-oxygen bond is elongating and the right carbon-oxygen is elongating and the left carbon-oxygen bond is compressing, due to which the extent of the polarization will become, we can say, equal in both the case. So again, the polarizability ellipsoid looks very similar, due to, again, we can say that this particular vibration is also Raman inactive. This particular vibration is also Raman inactive. Now the question arises, क्या ये हम इतना आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या ये वाला दो वाइब्रेशंस है रमन इनएक्टिव हैं या ये वाइब्रेशंस रमन एक्टिव है? क्योंकि अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं तो ये भी आपकी इक्विलिब्रियम से क्या है, डिफरेंट करता है, ये भी आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिफरेंट है, दिस इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम योर इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो देयर आर सम चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर टेकिंग प्लेस, ड्यू टू व्हिच वी कैन से दैट it should be Raman active, but it is not so. These two vibrations is Raman inactive. So this kind of, I can say, this kind of molecule should be look very carefully. अब अगर आपके पास ऐसा कोई molecule है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो to see whether there is a change in the polarization occurs or not during these three different kind of vibration. In case of your carbon dioxide molecule, what we do, we usually see the change in the polarizability, पोलराइजेबिलिटी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको हम क्या करते हैं, वी प्लॉट दिस चेंज इन पोलराइजेबिलिटी, दैट इज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन विथ रेस्पेक्ट टू दैट इज वर्सेस
displacement coordinate. Displacement coordinates. Displacement coordinate means कि हम इसको स्मॉल डिस्टेंस पे जब ये स्ट्रेचिंग होता है या बेंडिंग होता है तो उससे आपकी ओवरऑल वी कैन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से क्या कोई पोलराइजेबिलिटी में चेंज होता है या नहीं होते हैं, हमें वो देखना होता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, पोलराइजेबिलिटी को डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो वहां से मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं क्या दैट पर्टिकुलर वाइब्रेशन इज इक्वल टू 0 और इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर वो 0 के बराबर नहीं होंगे देन वी कैन से दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन इज रमन एक्टिव, एंड इफ दैट इज इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन इज inactive. So for this, let's now plot the graph between your polarization and I can say the displacement coordinate. And here the displacement coordinate we will represent it by z. इसको हम z के साथ क्या करेंगे, इसको हम represent करेंगे. And again the displacement can be on both sides. The positive side, that is the positive value of your z, will give you the elongation, and the negative value of this z will give you the compression. तो ये जो नेगेटिव z का वैल्यू होगा ये आपको बॉन्ड के कंप्रेशन को दिखाएंगे, और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z विल शो यू द बॉन्ड elongation. तो इसको जब हम प्लॉट करते हैं इन केस ऑफ सिमेट्रिक वाइब्रेशंस तो हम देखेंगे कैसा प्लॉट हमें मिलता है और उससे क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। सिमिलरली बेंडिंग की केस में क्या होगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साई विल रिप्रेजेंट द अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, इसको हम पॉजिटिव जी की वैल्यू जी से दिखाएंगे, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ जी विल गिव यू द डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट। सो नाउ let's first consider the symmetrical stretching of our carbon dioxide, this carbon dioxide molecule. Now we have said that we will plot the degree of polarization with your displacement coordinate. Now this is your x-axis and x-axis will give you the displacement coordinate. यहाँ पे right side में आपका क्या होगा, positive z value होगा, that is your elongation. On the negative side and the left side there is the negative z value which will give you the compression. This we have to plot this against your alpha. ये आपका इस axis में y axis पे आपका alpha का value होगा, that is the degree of polarization. And at the center we have 0 here, and again you have to keep in mind that this plot we are plotting with respect to our equilibrium configuration, and somewhere here यहाँ पे कुछ हम इसको क्या करेंगे, equilibrium configuration हम इसको बता देंगे, and this will represent your alpha naught, that is the degree of polarization when your molecule is at the equilibrium configuration, that is the central part. यहाँ पे इस वाले value of polarization को हम alpha naught से दिखाएंगे। तो क्या होगा, जब आपका सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा यहाँ पे इस साइड आपका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होंगे तो आपका इस तरह डिग्री ऑफ पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा। सो द वैल्यू ऑफ द अल्फा विल इंक्रीज इन दिस वे। Again, on the left side, if we see the compression, then जब आपका compression इस side बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे भी क्या होगा, degree of your polarization will decrease, आपका इस तरह decrease होगा. So you will get a graph like this, and this graph we can have a slope like this. इसमें हमें ऐसा कुछ slope मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपकी पॉजिटिव साइड में आपका एलोंगेशन दिखा रहा है, नेगेटिव साइड में आपका कंप्रेशन दिखा रहा है. अल्फा नॉट रिप्रेजेंटिंग योर इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ योर पोलराइजेबिलिटी, कि आपका जब
मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे तो उसका क्या पोलराइजेबिलिटी का वैल्यू होगा, ठीक है। नाउ the details of this graph is not important, हमारे लिए इस ग्राफ का पूरा डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्यों इतना जरूरी नहीं है, बिकॉज हियर वी आर डीलिंग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हम जब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वेदर इट कैन बी एलोंगेशन एंड कंप्रेशन, तो इसमें ज्यादा हमें इस ग्राफ की पूरा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सो इट इज क्लियर दैट नियर द इक्विलिब्रियम पोजिशन, यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम पोजिशन पे जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, 0 है। Displacement is 0 means the value of psi is z is 0 at this particular point, and after this side is your molecule is elongating, this is changing, it is displacement by elongation. On the left side the molecule is changing, it is displacement through compression. So this curve has a distinct shape, यहाँ पे आपका कर्व का एक distinct shape बन रहा है इस तरह, ठीक है, distinct shape बन रहा है, and we can say that from this graph we can say that d alpha upon dz is not equal to 0, कहाँ पे 8 we can say z is equal to 0। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका d alpha upon dz 0 के बराबर नहीं है। Thus we can say for small displacement, thus from this graph we can say overall, thus for small displacement, the motion, the important here is the motion. Motion produces a change in polarizability and is therefore Raman active। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, d alpha upon dz at this particular point where z is equal to 0, there are some values of, I can say, polarization is there, due to which we can say in this particular case the symmetric vibration is Raman active। ये हमारे पास Raman active। Now let's consider the other two kinds of vibration, that is, one is our bending vibration and the second is our I can say the second is our asymmetric vibration। So now let's take our bending vibrations or bending modes। तो bending modes में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है आपका कि ये आपका अगेन हम इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेंड आपकी क्या होगा, तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव z का वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव z का वैल्यू होगा, यहाँ पे 0 होगा। समवेयर हियर इज योर इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी एंड दिस इज अल्फा। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपका मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, मॉलिक्यूल आपका कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह चला जाता है ऊपर की ओर। So this is our first bending mode, and we have said we will represent positive z for the upward movement and negative z for the downward movement। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये अगर आपका वाइब्रेशंस हैं तो हमने देखा दोनों इधर जैसे कि आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऊपर जाता है तब भी डिक्रीज हो रहा है, नीचे जाता है तब भी डिक्रीज हो रहा है। तो वी कैन प्लॉट दिस लाइक दिस, यहाँ पे भी आपका डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट पे भी डिक्रीज हो रहा है। तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेंगे, एंड हियर वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर केस दैट d alpha upon dz is equal to 0। यहाँ पे इसका वैल्यू आपका 0 है, 8 वी कैन से z is equal to 0 इस वाली इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। Therefore we can say there is no change in the polarizability for the small displacement, due to which we can say कि the bending modes are Raman inactive। तो यहाँ पे due to this the d alpha upon dz is equal to 0। Now let's consider the asymmetric stretching modes।
stretching modes, or we can say asymmetric vibrations. So again यहाँ पे क्या होगा asymmetric stretching में, again if we plot the degree of alpha with our small displacement, that is our positive z, and we have negative z value. One is for compression, one is for elongation, and we have some here the value of our equilibrium, the polarization of our equilibrium configuration. So in this case, what we see here, if you see this particular figure, then यहाँ पे हम देख सकते हैं कि there is some change in the polarization is occurring. यहाँ पे दोनों sides आपके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. So we can say the displacement versus your polarization graph will look like this. तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलेंगे. So this will give you the value of alpha naught, that is the value of polarization at the equilibrium position. So here again we can say in this particular case that d alpha upon dz is equal to 0 at z is equal to 0. So again here we can say that the small motion will not lead to any change in the polarization of this molecule. So again, our asymmetric stretching mode is again Raman inactive. ये भी आपका क्या है, Raman inactive है. So this is how we can say that how we can find out how the different kinds of vibrations are Raman active and inactive. अगर इसी ग्राफ को हम वाटर मॉलिक्यूल के लिए बनाते हैं, तो वहां पे भी हमने देखा कि in case of water all other symmetric, asymmetric and bending vibrations are Raman active. But one thing we should keep in mind that the note, or I can say it is a rule that everyone should know about this, that symmetric vibrations give rise to intense Raman lines. So the first point is any symmetric vibration give rise to intense Raman lines. तो किसी भी symmetric vibrations की lines आपके Raman spectrum में बहुत intense होंगे. However, in comparison to our symmetric vibrations, I can say the asymmetric vibrations are usually weak, and sometimes these asymmetric vibrations are unobservable. And the third is our bending vibrations also yields very weak Raman line. So जैसे कि हमने वाटर मॉलिक्यूल में देखा कि all the symmetric, asymmetric and bending vibrations are Raman active. So वहां पे हमें सारे symmetric का भी हमें ग्राफ मिलना चाहिए, asymmetric का भी मिलना चाहिए, bending का भी मिलना चाहिए. However, in the reality, in the actual graph, usually only the symmetric vibrations will give you the intense Raman line. आपके symmetric vibrations का line ही बहुत intense होंगे, अच्छे से visible होंगे. Asymmetric vibrations or bending vibrations usually आपका peak जो है या intensity of that particular peak remains very weak. So sometimes you cannot get the peak for your asymmetric and symmetric bending vibrations. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो कभी-कभी ये जो asymmetric और bending vibrations का intensity इतना कम होता है कि आप उसको observe नहीं कर पाते हैं. Means it doesn't mean that these particular vibrations are inactive, but the intensity of that vibrations are very weak, and due to which the lines of this particular vibration in case of Raman spectra is usually on. So ये था आपका कि कैसे आप Raman activity of the vibrations आप कैसे निकाल. Now the second important point is the second important topic we have already said. It is the rule of
म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड दिस इज बिटवीन योर रमन एंड IR, आपके रमन और IR के बीच में ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है। देखते हैं ये क्या कहता है। So, and this is again important for the molecule, and for the molecule which have a center of symmetry. What do we mean by center of symmetry? Again, in case of carbon dioxide, we have a center of symmetry. Center of symmetry means if we have a point at the center of your central atom, and if we stretch on both side of this central atom, and we have met the other atoms at the same distance, we can say that this particular molecule have a center of symmetry. So the rule of mutual exclusion usually follows for the molecule which have center of symmetry. So what our rule of mutual exclusion principle says that if your molecules have center of symmetry, agar aapki molecule mein center of symmetry hai, so in that particular condition, then I can say your Raman active vibrations are IR inactive. आपकी रमन अगर रमन कोई वाइब्रेशंस अगर आपकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव हैं तो वो IR में इनएक्टिव होंगे। एंड आई कैन से वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस हमने कहा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहते हैं कि अगर आपका मॉलिक्यूल जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री उस मॉलिक्यूल में पाया जाता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस if you have a vibration that is Raman active, it means that particular vibration will be IR inactive, तो वो IR में inactive होंगे। अगर आपका कोई vibrations है जो IR active है तो वो Raman में क्या होंगे, inactive होंगे। ठीक है, but if there is no center of symmetry, अगर मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल सेंटर ऑफ सिमेट्री उस मॉलिक्यूल में नहीं पाया जाता है, then I can say some but not necessarily all vibrations may be both Raman and IR active. So the rule of mutual exclusion principle is only or mainly for that particular molecules which have center of symmetry. तो आपका जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो आपकी उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। और ये रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपका मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें पाया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में है, तो उसमें अगर कोई वाइब्रेशंस रमन एक्टिव होते हैं तो वो IR इनएक्टिव होंगे, और अगर वही वाइब्रेशंस IR में एक्टिव होंगे तो रमन क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं यही कार्बन डाइऑक्साइड के मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल मोड ऑफ वाइब्रेशन हम लेते हैं इन केस ऑफ CO2। तो देखते हैं इसका कौन सा रमन एक्टिव होगा, कौन सा IR एक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रमन और यहाँ पे हम लिखेंगे IR। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्रिक। द फर्स्ट इज आवर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो हमने देखा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। दूसरा हमारे पास होता है बेंडिंग मोड्स, एंड द थर्ड इज आवर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड्स। तो ये तीन मोड्स हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड में देखा है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मॉलिक्यूल हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वी हैव सेड दैट कि अगर कोई वाइब्रेशंस रमन एक्टिव होते हैं तो वो IR इनएक्टिव होंगे। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हमने देखा कि दिस इज रमन एक्टिव, ये रमन एक्टिव था तो ये IR में क्या होंगे, इनएक्टिव। ठीक है, बेंडिंग वाइब्रेशंस हमने रमन में देखा इनएक्टिव,
सिमिलरली एसिमेट्रिक भी हमने देखा इनएक्टिव है। तो ये दो वाइब्रेशंस आपके IR में क्या होंगे? These two vibrations will be IR inactive. IR means infrared and infrared active, that is vibrationally active. So the mutual exclusion principle again is very important rule, and it says that if a molecule having a center of symmetry and if the vibrations are Raman active, then that particular vibration will be your IR inactive. And if the vibrations are IR active, then in case of Raman, that particular vibration will be Raman inactive. So that's why your rule of mutual exclusion principle follows, or rule of mutual exclusion principle differs. So ये था हमारा वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने आज डिस्कस किया। एक था हमने कैसे रमन एक्टिविटी ऑफ द वाइब्रेशंस हम निकालेंगे, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज आवर रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट द vibrational Raman spectra, and then I can say vibrational rotational Raman spectroscopy, or I can say rotational fine structure. So that's all for today. Thank you.